Welcome back to Chasing the Target. Today we will be talking about who will be making the top 4 in this year's World Cup and the permutations and combinations that come with it. At least we will try to. पहले तो बात करते हैं इंडिया के बारे में. The only team that is officially qualified for this year's top 4, not only have they qualified but they are actually confirmed number 1 spot. 8 out of 8 victories. जो नेदरलैंड के अगेंस्ट हुआ, it doesn't matter. They have decided, confirmed के number 1 पे रहने वाले हैं. 8 out of 8 victories, consistent performance, dominated performance. Second best team आज South Africa convincingly हरा दिए. No problem at all. India will be number 1 and they will be facing the number 4 team. वो देखना है कि कौन रहेगी. And also, it's safe to say कि Bangladesh, England, Netherlands and Sri Lanka are out of this World Cup. They are out of the reckoning for the top 4. उन लोगों के पास कोई opportunity नहीं है because they will maximum finish 4.8 points के साथ, and that will not be enough because the top 4 minimum will be at least 10 points. So that leaves us with 5 teams. So number 2 पे South Africa is more or less done, even though mathematically there is some small possibility कि नहीं होएगा, but that is almost impossible. 99% South Africa is finished. They will finish in the top 4. They might not finish second or third. वो depend हो सकता, but 99% South Africa is qualified. So that's number 2. Now that leaves us with 2 positions, number 3 and number 4. उसके लिए there are 4 teams that are looking forward for. एक टीम है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड न्यूजीलैंड, थर्ड अफगानिस्तान एंड फोर्थ कुदरत का निजाम पाकिस्तान. अभी the permutations and combinations are very interesting. ऑस्ट्रेलिया 10 पॉइंट पे है करंटली. उन लोगों के पास 2 गेम्स है, relatively simple game, एटलीस्ट एक जो बांग्लादेश के अगेंस्ट है लेटर ऑन इन द वीक, तो वो कन्विंसिंगली अगर जीत गए तो दे विल डेफिनेटली मेक द प्लेऑफ्स. द इंटरेस्टिंग गेम इज अगेंस्ट अफगानिस्तान. अभी अफगानिस्तान और बांग्लादेश को अगर उन्होंने हरा दिया तो दे विल मेक 14 पॉइंट्स. दे विल बी कंफर्टेबल सिटिंग प्रिटी सेकंड या थर्ड, दैट डजंट मैटर, बट उन्हें कंफर्टेबल रहेंगे. So it depends. If they win both their games, they're good. If they win one game, they are still more or less decent. If they lose both games, then it becomes interesting. Then let's talk about the second team, New Zealand. अब न्यूजीलैंड आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ सो वेल, 4 गेम कंसिस्टेंटली जीतने के बाद देव लॉस्ट द नेक्स्ट 4 गेम्स. तो देव मेड इट अ लिटिल बिट ट्रिकी उन लोगों के खुद के लिए. इंजरीज हैव नॉट हेल्प देम, बट एट द सेम टाइम उनला काफी डिसअपॉइंटेड रहेंगे कि और एक गेम नहीं जीत के उन्हें थोड़ा अपने आप को कंफर्टेबल नहीं कर लिए हैं. सो विद दैट बीइंग सेड, दे प्ले श्रीलंका हु इज आउट बट इज जस्ट प्लेइंग फॉर प्राइड नाउ. Now the situation with them and Afghanistan and Pakistan is very similar. So New Zealand doesn't not only have to win, they have to win a little bit convincingly against Sri Lanka so that उन लोगों का रन रेट जो ऊपर है वो ऊपर बने रहे and they finish either third or fourth. So that is the situation for New Zealand. Now we will talk about Afghanistan that not a lot of people are talking about. They have 2 difficult games, उसलिए शायद लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि उन्हें जीतेंगे या whatever. But उन लोगों के पास अगर उन्हें 2 गेम जीते तो they will jump up to 12 points and they will have a very very good chance of qualifying. तो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है. बट दे 2 गेम्स आर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका. दोनों भी मुश्किल गेम्स रहने वाले हैं. बट ये अफगानिस्तान टीम को हम डिसरिगार्ड नहीं कर सकते. उन्हें इंग्लैंड के जैसे जबरदस्त टीम को भी हराए हैं. दे हैव बीन प्लेइंग कंसिस्टेंट क्रिकेट. अच्छा बैटिंग भी चल रहा है. बॉलिंग तो विद मुजीब, विद राशिद ऑफ कोर्स, एंड नबी भी लास्ट गेम में विकेट निकाला. देयर नूर अहमद इज बॉलिंग, फजलक इज बॉलिंग वेल. तो उन लोगों की टीम क्लिक हो रही काफी हद तक. जॉनथन ट्रॉट हैज बिन really getting this team together और बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा टीम को. तो cannot really say, but yes, they have 2 difficult games. तो वो है important देखने के लिए क्या होगा. And then finally the most important, the RCB of world cricket, I would call them, because इनला हमेशा statistics and अगर different results के ऊपर depend करते for them to make the playoff spot. पाकिस्तान के साथ we've seen this happen a few times and that is continuing. For them, they need to beat England. And England will be playing for the Champions Trophy spot. तो मुश्किल गेम रहेगा, but they need a convincing victory against England. They need a big margin victory against England to confirm spot, and they need a couple of results to go their favor as well, which is New Zealand losing to Sri Lanka and Afghanistan also losing one or maybe both of their games. तो वो है situation currently. तो काफी tricky है situation. There are 4 teams eyeing 2 spots with India and South Africa more or less. India 100% confirmed, South Africa 99% confirmed. 2 spot के लिए ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड न्यूजीलैंड. अब चारों का कुछ भी हो सकता. एज वी एक्सप्लेन द परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस टू यू, कुछ भी हो सकता है. सो वेरी इंटरेस्टिंग वीक अपकमिंग फॉर अस. द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पे है कि ओवर द नेक्स्ट 4 days इन बैंगलोर देयर इज कंसिस्टेंट रेन. The game between New Zealand and Sri Lanka is in Bangalore on Thursday.
4 दिन तक कंटिन्यूसली रेन रहने वाला है. वी आर ऑन संडे टुडे. 4 दिन कंटिन्यूसली रेन, it could affect the pitch, it could affect the outfield. बहुत चीज़ें हो सकते हैं, so that is kind of an exclusive news coming for you कि next 4 दिन बारिश होने वाली है बैंगलोर में. Possibility है कि rain wash out भी हो जाए. Then it's just a matter of Afghanistan losing and Kudrat ka nizam happening for Pakistan. If Afghanistan continue to win their both games, that's also a possibility. Prediction for me is that Australia will be the third team to go through and Kudrat ka Nizam Pakistan will be the fourth team to go through. ये मेरा prediction है because luck has favored them in the past few games and I feel like that might continue. Afghanistan के लिए थोड़ा difficult हो सकता. New Zealand के लिए injury prone 1 and 2 they have to win with a convincing margin, so वो maybe थोड़ा problem हो सकता and बारिश is an issue. For that reason, I'm choosing Pakistan, the Kudrat ka Nizam as my fourth team, and then we want an India-Pakistan semi-final and then Australia and South Africa semi-final, which will be very, very interesting. Stay tuned for more on Chasing the Target. Please like, subscribe and share. Thank you.